Assalamu alaikum. This is Crypto PNL, and let's discuss about BTC and what is happening to the crypto market. So, coin market cap. Let's see what is happening. Well, the coin market cap and the crypto market volume is dropping, and we are breaking lows, and it is dropping below 800 billion. Last night it was below 800 billion. So things are not looking good for the crypto market. BTC market cap, this is ugly, 349 billion, 115 billion, Tether 68 billion, USDC 55 billion, 31 billion, 17 billion. So this USDT, that Tether, is under lots of scrutiny, and 9 billion, 14 billion. Dodge, the meme coin, the Polka. I don't know what is the purpose of this stupid coin Dodge. And still, it is 10 number. This is the worth of crypto market. Oh my God. Allah khair करे. Anyhow, what we have here, हमारे पास एक extreme एक waterfall drop हुआ है. That's a waterfall drop. Normally, it is a waterfall drop. Price stays there, and then waterfall. Okay. The best thing about it is drop का ये फायदा हुआ कि that we had our volume. So that means इस move में I think last night जो move हुआ या evening को जो move हुआ, that move that breaks this 20k, इस मूव में काफ़ी वॉल्यूम, काफ़ी लोग लिक्विडेट, काफ़ी कुछ इसमें डिस्ट्रॉय हुआ. लॉट्स ऑफ people get hurt by this move because most of the people were not expecting कि 20k break होगा. The big players, smart money, whatever, the big players, the big boys, because the volume here is pretty high. As you can see, we had some volume here, but this is the extreme, in my opinion. We've been, I mean, lots of stress, lots of pain. I can see the pain in this chart, lots of pain. And what they do, they drop the price. And what they did, I mean, what I think, they dropped the price, retraced it. This is the accumulation. This is the accumulation move, and I expect we are going back towards this area anyway. This is what I see. Why? In my opinion, मेरा जो opinion है, मैंने जो इस market से देख कर जो समझा है, market के दो ही काम होते हैं. पहला काम liquidity. Market liquidity hunt करने जाती है, ठीक है? That's the first thing. Liquidity, in other words, if I put it like that, in other words, liquidity is equal to cash. जहाँ कैश पड़ा होता है उसे लिक्विडिटी कहते हैं. जब भी कोई एसेट या कोई कॉइन लिक्विडेट होता है या कोई बंदा लिक्विडेट होता है, तो उसके जो फंड्स होते हैं वो कैश डॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो लिक्विडिटी इज कैश. मार्केट दो ही काम करती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है, स्टॉप आउट करती है, स्टॉप हंट्स, एंड इनएफिशिएंट मार्केट को एफिशिएंट करती है. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट. मार्केट इस फिलॉसफी के ऊपर घूमती है मोस्टली. लिक्विडिटी, स्टॉप हंट्स, इनएफिशिएंट इज इक्वल टू एफिशिएंट. सो वेयर डू आई सी, अगर हम इस पूरे उसमें देखें, आई हैव पोस्टेड समवेयर in my YouTube channel. मैं आपके सामने भी शेयर कर देता हूँ. In my YouTube channel, I had this. Look at this. This is my YouTube community, and what did I see? I posted something like this is the area where I'm interested. 17,550. Why I'm interested in this area? Why? Because this is a key low. We were going close to a low. और अगर आप गौर करें, प्राइस जस्ट स्लाइट
just like in seconds made it went below it and then it snapped back. This is what I look for. I waited all day for 17500 to be tagged because I wanted to see a reaction, and that's enough of a reaction. तो प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने इस मूव में तीनों काम पूरे किए. What they did, इन्होंने liquidity grab की, इन्होंने stop hunt किया, and इन्होंने efficient किया market. So this level is so important. और इस मेरे opinion के मुताबिक this is the most important level. Why? Where inefficiency? This is the weekly chart. समझने की बात है. This is inefficiency. This is inefficiency. Price just cleared the inefficiency. ठीक है? Inefficiency क्या होती है? Fair value gap. The fair price. जब प्राइस बहुत तेजी से मूव कर जाए किसी लेवल से, जैसे कि इस लेवल से बहुत तेजी से ब्रेकआउट किया, तो व्हेन दे ब्रेक, जब इन्होंने ब्रेकआउट किया तो प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ बहुत सारे बाय ऑर्डर्स रह गए थे विच बिन फिल्ड. और अब आप अगर नोटिस करें, बिकॉज दिस इज द लिक्विडिटी कैश थ्योरी, और इस लो के नीचे, एवरी लो के नीचे, दिस इज इंपॉर्टेंट स्विंग लो, इसके नीचे आपका स्विंग हाई है, इसकी लिक्विडिटी है. सो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है, दिस मार्केट इज स्टिल इनएफिशिएंट इन दिस एरिया, इन दीज एरियाज. लेकिन मेरा ओपिनियन ये है, मैं जो अपने ओपिनियन से कहता हूँ, मार्केट हैज टू बाउंस फ्रॉम हियर. This block has to give a bounce. This block is going to stop this market from drop in any further movement. Yes, there is another low here. Price can come here, but in my opinion, in this vicinity, price has to bounce. This is what my thinking is. So our first wall of support is coming. दूसरी important बात जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं, मार्केट जो है वो it can go towards these levels now. It can easily go towards these levels. So be careful. यानी आपको बहुत सारी आवाजें आएंगी मार्केट जीरो पर जा रही है. मार्केट कैन गो टू जीरो. आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट जीरो पर नहीं जा सकती. मार्केट कैन गो टू जीरो, बट ट्राई टू फिगर आउट वन थिंग. फॉर दिस मार्केट टू गो टू जीरो, वी नीड अ ब्लैक स्वॉन इवेंट. अभी तक ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं आया. ब्लैक स्वॉन इवेंट बहुत फास्ट, वी कैन से कि ये ब्लैक स्वॉन इवेंट है, लेकिन ब्लैक स्वॉन इवेंट इससे भी खतरनाक होता है. इट हैपन्स इन अ डे और इन आवर्स. सो उसके लिए कोई ट्रिगर होना चाहिए. तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट आई सी फ्रॉम द मार्केट. लेकिन ये जो मार्केट है, इट इज़ गेटिंग क्लोजर टू समवेयर लाइक इन एन एरिया, आई थिंक, जहाँ इसको रेजिस्ट करना चाहिए. दिस इज अ सपोर्ट. दिस एरिया हैज़ टू रेजिस्ट. आई मीन, अगर आप गौर करें, जब मार्केट पहली दफ़ा ड्रॉप हुई थी तो मार्केट किस लेवल पे आई थी? $28,000. सो दिस बिलो 20 के इस एरिया के अंदर बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस. आई थिंक इस मार्केट के अंदर बाउंस हो सकता है. मार्केट जल्दी मूव कर रही है नीचे. इट्स अ साइन. बीटीसी बहुत पैथेटिकली वीक नजर आ रहा है, बट इट्स अ साइन. साइन किस चीज़ का है? समथिंग इज रशिंग इनटू समथिंग. ये मार्केट वी शेप रिकवरी नहीं करेगी. इन माय पर्सनल ओपिनियन, वी शेप रिकवरी यहाँ से हो सकती है, इस लेवल से, व्हेन हम पूरी मार्केट को एफिशिएंट कर दें. ये मार्केट इस एरिया में एफिशिएंट है. अगर हम देखें, इस एरिया में एफिशिएंट है. सो वेयर इज द कैश? कैश कहाँ होता है? कैश एफिशिएंट मार्केट्स में या लोज के नीचे होता है? डू यू थिंक कि इस लो के बाद वेयर इज द नेक्स्ट लो? दिस इज द नेक्स्ट लो, माय डियर. Or this low is at 9,787. I'm not saying price is coming here right now, but I'm saying be careful, because we can move around here. This is where this play area is, where the price is going to decide where it is going to go. अगर इस मार्केट के अंदर बुलिशनेस है तो क्या होना चाहिए? ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, ये एक्यूमुलेशन रेंज है, और उसके बाद ये जो यहाँ जो विक होगी, दिस इज आर demand zone. Here we should not go below 20k. से नीचे जाना BTC के लिए is very bad. Now we should not go below this 10k level. Below 10k, I mean, I give you an example. This is the monthly candle. Now watch the monthly candle. Monthly is breaking structures. जब monthly structure break करता है, मैं आपको फिर उस दिन भी बताया था, price
definitely would like to come here. So कब आएगी? I cannot tell you, but we are breaking structures. Look at this. जब क्रिप्टो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया उसके बाद क्या होता है? प्राइस लो को स्वीप करती है या इनएफिशिएंट मार्केट को. मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि मार्केट ने इस लो को स्वीप नहीं किया. सो दीज आर द थ्री लोज. लाइक अगर हम गौर करें तो यहाँ माइकल सेलर की वो भी है. दीज आर द थ्री लोज. वी आर स्टिल वेटिंग टू बी टैग्ड. I'm not saying this market will tag it, but I'm saying that अगर ये टैग होते हैं तो don't be scared or don't be worried. So anything can happen in this crypto market. हम 69,000 से 18,000 पे आ चुके हैं, 17 पे. तो आप किसी डाउट में मत रहें कि प्राइस कहीं भी जा सकती है. लेकिन इस लेवल पे बैरिश होना इज नॉट द राइट. यस, इनएफिशिएंसी अभी भी है और ये हमारा एक लो टैग हो चुका है विच इज़ अ की लेवल इन माय ओपिनियन. इस लो के बाद रिएक्शन होना चाहिए. अगर इस मार्केट के अंदर बुलिशनेस है तो नेक्स्ट मंथ की कैंडल के अंदर इसको विक बनानी चाहिए और नेक्स्ट मैक्स की कैंडल को एटलीस्ट ऊपर जाना चाहिए. सो वी शुड बी केयरफुल. और दिस इज व्हाट ऑल आई हैव फॉर यू. BTC doesn't look good, but we are at support now. Finally, we are at level which I think should resist the market. Ethereum can come to $500 possible. We have this level. हमारे पास ये level है. That's the breaker. We are getting closer, but the market के दो ही काम होते हैं. Remember that. पहला काम liquidity लेना. कोई important high को stop hunt. दिस इज अ स्टॉप हंट. उसके बाद मार्केट डाउन हुई. नॉर्मली मार्केट किसी बड़े लेवल को पेनिट्रेट करके वापस ड्रॉप होके बड़ा मूव बनाती है. स्टॉप हंट लिया यहाँ से एंड देन ड्रॉप्ड. व्हाट हैपेंस हियर? वी वर नॉट एबल टू स्टॉप द मार्केट. लेकिन यहाँ मार्केट ने इनएफिशिएंसी को फिल किया. मार्केट प्रॉबेबली इन लोज को स्वीप कर गई. बट देयर इज सम पॉइंट व्हेयर आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मार्केट हैज सम लोज टू स्वैप. अब मैं आपको ईस्ट का दिखाता हूं. आई वाज लुकिंग फॉर ईस्ट टू स्वैप 915 लेवल. व्हाई? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इन दिस चार्ट. वॉच दिस चार्ट. ये वो लेवल है जिसको मार्केट स्वीप करना चाह रही थी. दिस इज 915 लेवल. और उसके बाद ये इनएफिशिएंसी है. मार्केट ने अगर नीचे आना है तो मार्केट हैज टू कम डाउन हियर. Another wick into 767 or something like that. But what I'm saying here, हमारे इस लेवल को स्वीप करने के बाद मार्केट इज showing some resilience. So what we need strength from the market. At least market has to break the market structure. ये है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर. On the 1 hour time scale, take out the swing high and then हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं. क्योंकि इन सब मूव में मार्केट ने स्विंग हाई नहीं ब्रेक किया. कैन यू सी दैट? सब मूव में. सो आई डोंट वांट टू बी दिस बी अ सक्कर रैली. वी नीड टू ब्रेक द स्विंग हाई. वी नीड टू गो अप. यस, अगेन वी नीड टू ब्रेक दिस हाई, confirm the support and target these areas. Okay, this is what I expect from the market. I want the market to hold the level. Now अगर आप गौर से देखें, ETH is building what? ETH is building liquidity. Where? Under these lows. What is going to happen here? This is the liquidity being generated. Both sides generate carry liquidity. What I expect, ये एक low है. So if it is bullish and if it is going to be a good trade setup, I think we should tag this low down first. हम इस लो को टैग करें. टेक आउट दिस लो. याद रखिएगा, प्राइसेस दो काम करती है. लिक्विडिटी हंट करती है, स्टॉक हंट करती है और इनएफिशिएंट मार्केट को फिल करती है. ये तीन ही काम है मार्केट के अंदर. मार्केट उसके अलावा नहीं कुछ करती. क्यों नहीं ये मार्केट यहाँ से बाउंस की? व्हाई दिस लेवल? बिकॉज इस लेवल के नीचे दिस इज द स्विंग लो. ये जो लेवल है 1915, इट्स अ वीकली स्विंग लो. इसको स्वीप किया, मार्केट वेंट अप. इसका मतलब यह है कि मार्केट इज ड्रॉन टूवर्ड्स स्विंग लोज, towards the liquidity or inefficient market. I would like to see कि ये मार्केट इस लो को स्वीप करे. दिस लो, स्वीप इट, fill the inefficient gap.
and reaction day towards this high. That's the trade setup. These kind of a trade setup we look for. We should look for something here. अब आप कैसे ट्रेड करते हैं, दिस इज योर पॉइंट, बट आई एक्सपेक्ट दिस मार्केट टू बिहेव लाइक दिस. अगर ये मार्केट यहां से ऊपर चली जाती है, then what I look for something here. This is what I look for to come here. Two setups हैं straight में. This is the easy setup which I'm looking for. Market traders game हो चुकी है. Remember that. This market is a traders game now. आप लोग ये बोलें कि आप पैसे लगा के तो you can make money. I think you have to earn money. Market में making money is not getting easier. You have to earn. और उसके लिए you have to learn the trading. Trading किसी से भी सीखें, लेकिन learn. लेकिन इस बात को ज़हन में रखें, ट्रेडिशनल वे से निकल कर we have to think, stop, hunts. And the second thing, FBG or inefficiency. Don't mind my spellings, not good with it. This is what the market is looking for. Stop hunts and inefficient market. This is market usually does. और इसी के ऊपर ये मार्केट घूम रही है. आप चाहे इसको प्रूव कर लें, मैं आपके सामने कुछ चार्ट्स में प्रूव कर देता हूँ. I'll show you what I'm saying here. उसके बाद आप डिस्कस करें. लेकिन this look at this. मेरी ये मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई थी and they have a bounce. So we are bouncing off the lines. Now we are building liquidity here. Come on, BTC. So let's talk about the BTC. Why I'm talking about inefficiency is stop hunt. I'll put a log chart. ये monthly chart है. इस मार्केट के अंदर क्या होता रहा है on the monthly scale? What is happening here? पहला मूव देख लें. पहला मूव आपको दिखा रहा हूं. ये जो कैंडल थी, this is inefficiency. Inefficiency, can you see that? मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने ये लो स्वीप किया है. That's the low. They swept that low. उसके बाद they bounced और inefficient मार्केट को फिल किया है. What they मतलब इन्होंने क्या चीज फिल की है? Let's reduce the intensity of this white color so that you can see. What market did? मार्केट ने एक इनएफिशिएंट मार्केट को फिल अप किया है, एक लो स्वीप किया है. सो वेयर हमारा इंटरेस्ट कहाँ होना चाहिए था? हमारा इंटरेस्ट इस लो पे होना चाहिए था, इस एफिशिएंसी पे होना चाहिए था. कहाँ? क्योंकि जो नियर लो होता है, दिस लो, दिस इज द लो विच इज अ शॉर्ट टर्म लो. प्राइस शॉर्ट टर्म लो की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसके साथ अगर इनएफिशिएंसी भी है तो प्राइस कोशिश करती है उसको फिल करें. इन दैट केस प्राइस ने सिर्फ शॉर्ट टर्म लो को टैग किया. शॉर्ट टर्म लो को टैग करने के बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, द मार्केट डिस्प्लेस करे. उसके बाद मार्केट ने क्या किया? दिस इज अ मंथली चार्ट. मार्केट ने रिट्रेसमेंट की. वेयर इज द रिट्रेसमेंट? कहाँ आई? मार्केट ने एक इनएफिशिएंट मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट की. दिस इज योर लॉन्ग. If you are a long player and if you know what you're doing, you must long the low of that candle. This is the inefficiency. हमें इसको टैग करना चाहिए. And what I look for, this is the, और उसके बाद what the hell is this? And this is how one should look for the longs. ये मंथली स्केल के ऊपर है. ये आपका ट्रेड सेटअप है. और कहाँ आप टारगेट करेंगे? You target the highs. इट्स अ ब्यूटिफुल 13 आवर ट्रेड. सेकेंड, उसके बाद क्या हुआ? मार्केट फिर बाउंस की. यू कैन नॉट ट्रेड दिस हाई. यस, अगर आप 14% 15% प्रॉफिट ट्रेड में रहते हैं तो दैट मेक सेंस. मार्केट ने क्या किया? व्हाट इज मार्केट डूइंग? मार्केट कंसोलिडेट हुई. अगर आप गौर करें कंसोलिडेशन में, मार्केट ने अपना मूव बनाने से पहले व्हाट मार्केट डिड? मार्केट स्वेप्ट दैट लो. सो कीप एन आई ऑन लोज. स्वेप्ट दैट लो, डिस्प्लेस. उसके बाद आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए? दिस इज योर एंट्री. दिस हाई और इस लो के बीच में परफेक्टली इट स्वेप्ट दिस एरिया. और इन माय ओपिनियन अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूँ तो मैं इस एरिया के अंदर इंटरेस्ट जरूर शो करूँ, इस कैप के अंदर. बिकॉज वाई? यहाँ मार्केट इनएफिशिएंट है. वाई दिस इज, ओहो जीरो पे चले गए. सो दिस इज व्हाट आई लुक फॉर. वीडियो मैं चाहता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा लंबी हो, बट आई जस्ट गिविंग यू some
some clues that what one should, और इस लो के ऊपर यस कहना आसान है, ये ट्रेड्स लेना आसान है, मतलब मुश्किल है, लेकिन what you should do, should target these highs. क्या उसके बाद क्या हुआ, लेट्स टॉक नाउ. क्या हुआ, मार्केट ड्रॉप हुई. आप इस कैंडल को देख रहे हैं, इट्स अ क्लियर जार ऑफ अ कुकी, अ कंप्लीट बार. इसके अंदर ये हाईली इनएफिशिएंट बार था. मार्केट ने क्या किया, मार्केट आप इसके स्ट्रेट अवे लो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ने इस पूरे लो को फिल किया. व्हाट मार्केट डिड, मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने इस लो से इस हाई तक की इनएफिशिएंसी को फिल किया. दैट वाज योर बायज. अब व्हाट आई एम सेइंग हियर कि हम मार्केट दो ही काम कर रही है. मार्केट लो स्वीप कर रही है. अब वॉच दिस, एक बड़े मूव से पहले मार्केट ने इस लो को स्वीप किया. कैन यू सी दैट, आप देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ये आदत है कि कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट लेने से पहले मार्केट क्या करती है, मार्केट लॉन्ग के पार्टिसिपेंट को बायर करती है. यानी दिस वाज द ट्रैप फॉर शॉर्ट सेलर्स और दिस वाज द ट्रैप फॉर द लॉन्ग सेलर्स. दोनों को स्टॉप आउट करके मार्केट ऊपर चली जाती है. सेम गोज हेयर. इनएफिशिएंसी, वॉच दिस, ये इनएफिशिएंसी थी. मार्केट ने इस इनएफिशिएंसी के अंदर ट्रैप ड्रॉप किया. यस, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या इफ यू वांट टू मेक मनी देन यू हैव टू. नाउ इस मार्केट के अंदर कहाँ लिक्विडिटी बिल्ड है, मार्केट इन लोज में है, ठीक है. और इस विक के अंदर मार्केट ने क्या फिल किया है, मार्केट ने सिर्फ इस कैंडल की इनएफिशिएंसी फिल की है. इनएफिशिएंसी फिल करने के बाद मार्केट टुक आउट दिस लो और बाउंस्ड इट. अब आप अपने इस मार्केट देखें, इसमें क्या किया मार्केट ने, मार्केट टुक आउट दिस हाई और उसके बाद अब मार्केट कहाँ जा रही है, एक इनएफिशिएंट मार्केट को फिल करने जा रही है. पहला इनएफिशिएंट मार्केट को फिल किया इसने ये लो टैग कर लिया है. नाउ अगर हमें यहाँ से बाउंस मिलता है तो वी शुड बी ट्रेडिंग. अभी तो आप ट्रेड ले सकते हैं लो टाइम फ्रेम, लेकिन जस्ट फॉर अ थ्योरी, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट्स सेकंड इनएफिशिएंसी. और उसके बाद ये लो है, ठीक है. तो इस लो पे आने के लिए बीटीसी नीड लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट्स ऑफ एफर्ट. ब्लैक स्वान इवेंट 10 के इतने आराम से नहीं आएगा, लेकिन यू मस्ट बी रेडी. आई डोंट थिंक सो इट विल कमिंग इन दिस टाइम अराउंड. अभी आने लगा है, आई डोंट थिंक सो. दिस लो विल कम विद टाइम. अगर ये लो आ जाता है तो मार्केट विल रिकवर, और मुझे ऐसी मार्केट कंडीशन नहीं लगती कि मार्केट विल रिकवर इंस्टेंटली. सो बी केयरफुल. व्हाट आई एम सेइंग कि मार्केट सिर्फ दो काम करती है, एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी एंड स्टॉप फंड. रेस्ट सब ड्रामा है. दीज ट्रेंड लाइंस एंड दिस, ये ट्रेंड लाइंस क्या बनाई जाती हैं, दिस ट्रेंड लाइन इज एक्चुअली इसलिए ड्रॉ की जाती है क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी ट्रैप की जाए. एनी हाउ, हैव अ गुड डे. अस्सलाम वालेकुम.